Okay, so now we are going to start a mock interview for our student Sayam Gupta, and this mock is for DRDO. So Sayam, first of all, tell us about yourself. Thank you, sir, for letting me introduce myself. I am Sayam Gupta. I belong to Gorakhpur district from Uttar Pradesh. I have graduated from JK Institute of Applied Physics and Technology, University of Allahabad. I have done my project in key distribution protocol for AMI system in smart grid. And after that, I have been preparing for PSUs. When did you pass your B.Tech? So in 2022. 2022. So you are preparing for public sectors. Yes, sir. And I am also preparing for M.Tech. And fortunately, DRDO has opened his. So this year, did you appear for GATE examination? No, sir. Why? So I was trying really hard for getting in DRDO. Okay, but I have applied for many other PSUs. But why not GATE? GATE is so important examination. So I have qualified my GATE paper already. Okay, that is why you did not appear. Yes. So why do you want to join DRDO? So because of its indigenous lab programs, higher society status, and it's give a quite well. Sorry, sir. Yes. Continue. So for its indigenous labs, there are different research PSUs also like ISRO and other, but they are like particularly, they are researching in a particular field. But DRDO has indigenous lab which work in different fields like SAG lab, which is quite famous for its cryptography, and there is a Joint Bureau. So have you chosen some particular area to work for yourself in future if you join DRDO or So you join some other organization? So I really wanted to work in cryptography and cybersecurity area, but I'm also free for other opportunities too. Okay, so do you have some prior knowledge of cryptography? So I have a little bit of knowledge in cryptography. I've done my research in key distribution protocols in smart grid. What is the reason for going into this cryptography field? What is attracting you towards that field? So firstly, it's quite very important nowadays because there are many security issues and reasons for as technological advancement, and furthermore, it's quite lucrative to me. Okay, so what are your favorite subjects which you have prepared for the interview? So operating system, digital logic system, and data structure algorithm. Okay, 3 subjects. Yes, sir. So you are comfortable in digital electronics? Yes, sir. Okay. So in digital electronics, what topics are your favorite topics? So minimization, Hmm? computational circuits, minimization, computational circuit, Boolean algebra. Okay, do you know signed representation? Yes, sir. Okay, so can you write a decimal integer like we have minus 41? This is a decimal integer. Okay, sir. Okay, so can you write this in sign magnitude form? Signed binary, sign magnitude form? Yes, sir. Yeah, tell us. So by making it negative number in 2's complement, we can store it in binary form. Sign magnitude form में इसको represent करना है. Okay, using sign magnitude form method, and you have to express it in signed binary form. तो क्या representation आएगा बताइए? Okay, sir.
0 1 0 1 0 1. फिर से बोलो 0 1 0 1 0 1. ये आंसर है आपका। Yes sir. ओके अच्छा एक सर्किट है हमारे पास Okay. ठीक है Yes sir. ये क्या सर्किट है ये बताइए पहले। So it is a decoder, a 3 into 8 decoder. 3/8 डिकोडर। Yes sir. ओके क्या काम करता है ये कैसे काम करेगा इसका बता सकते हो ऑपरेशन। Yes sir. बताइए। So it will choose one of the one of the 8 output lines on the basis of the input from the 3 input lines. So it's like for for A, B, and C equals to 0, it will pick Y naught. For A equals to 0, B equals to 0, C equals to 1, it will pick 1, and it literally converts a binary number to decimal number. ओके अच्छा यहाँ पे एक सर्किट और लगा देते हैं ये। Yes sir. ठीक है Okay sir. तो आप मुझे एफ बता दीजिए एफ इक्वल टू क्या होगा। So for if any signal, if sir अगर C अगर sir अगर if output is if we input A equals to 1, B equals to 1, and C equals to 0. I have not given any particular input na. Okay sir. I want f equal to expression for f boolean expression for f. Can you find or not? 1 second. 1 second sir. Sir, it's S bar. Yes, sir. So it's S bar in S bar dot A bar B C bar. तो s की कोई वैल्यू नहीं है क्या? So it's Okay, no issue. 0 and 1. Rasika ma'am, you can ask your questions. Okay. So, Sanyam, what have you studied in data structures and algorithms? Ma'am,
basics data structures and What are basic data structures? basic data structures are data structure used to perform operations on data like storage, optimizing data. Sorry, ma'am. Basic data structures are data structures that are used to store, retrieve, and organize data. Like example is array, linked list, and there are also trees and graphs. Okay, and are there any advanced data structures also? Yes, ma'am, there are. Okay, what is the difference between data structures and basic data structures? Just storing the data in a particular order are basic data structures, and if we perform some operations on them, like putting them in a particular sequence or performing sorting operations or in increasing or decreasing increments, then are normal data structures. And what are data structures? This what I said, ma'am. Basic data structure just storing the data in a given input status. While performing operation, it's a basic data structure, and if we perform some more operations, then it can be data structure. Yeah, and any example that you can give so that we can clearly differentiate between the two? Like just inputting data in array or storing variables and performing some operations, and for basic data structures, and if we perform traversing or sorting, then it is data structure operations. Okay, in algorithms, which all algorithms you are familiar with? I can try to answer any question. Okay, so what is heap sort? Heap sort is sorting. Heap sort is performed on when data are stored in heap segment, and sorting heap is like if we have min heap and we will remove the root element, and then from the leaf element we will put the leaf child to the root element, then we will shuffle it so that it can the child element that is on the root, it will then again go to the leaf node, and then we will again remove the root element from the top of the heap tree. This is called heap sorting. Okay, what is the complexity of heapy file? ON. N. So I mean log n. Okay, in worst case? And Okay, what can I say that it can be order of height of the tree? Heap tree? yes, ma'am. Okay, is it same log n and height? Height of the tree is log n. In Okay, worst case, what is the time complexity of heap sort? n log n. Is it in place In average algorithm? case. Hello, ma'am. In place algorithm, adaptive algorithm, or stable algorithm?
Ma'am, can you repeat your question again? Okay. What is in place algorithm? Any idea? Yes, ma'am. In place algorithm is an algorithm. If we have a similar, if we have a common element in a given structure, and if we short it and the position of the two same elements remain the same, then it is in place element. In place algorithm. Sorry. Okay. What are adaptive algorithms? Sorry, ma'am. Okay. Can you tell any example of in place algorithm? Insertion sort. Okay. What happens in insertion sort? What happened in insertion sort is we first loop over the elements. There is a loop, for loop from I1 to n elements, and then there is a loop for j elements such that j is less than equals to I, and then we will compare j with j minus 1, and j is minus minus till j is greater than 0, greater than equals to 0. Okay. How many are the number of comparisons that need to be performed in insertion sort? N into n minus 1 by 2. Which searching algorithm we are using then? And what are you saying? Any search algorithm you're using for comparison of elements? How are you like finding elements and then putting it in the correct position? Ma'am, by swapping. Swapping. Yes, ma'am. What if we apply binary search in the insertion sort? Will there be any change? I don't know. Sorry. Okay, what is the overall time complexity of insertion sort? Ma'am, it's n square. N square. I mean, best case, Ma'am, it's still n square. it cannot go to n. Have you heard of inversions in insertion sort? No, ma'am. Okay. What is dynamic programming? Ma'am, dynamic programming is a way of designing algorithms in which we will divide the process in sequence, and each sequence will be optimized to give a optimal solution. And what are the important conditions for dynamic programming to apply? What are the different techniques of dynamic programming? Any idea?
technique used in or algorithms used for dynamic programming. Not algorithms, techniques. Like how do we apply dynamic programming? How do we solve a problem? Suppose, okay, what are the examples of dynamic programming? Well, examples of dynamic programming are 0-1 knapsack problem. Okay, so in 0-1 knapsack problem, what is the how do you solve 0-1 knapsack? 0-1 knapsack problem can be solved by cost ratio, by using the cost ratio of elements. If it has a higher cost ratio, we will put it in the bag. If it has lower cost ratio, then we will not put it in the bag. What was the project, your B.Tech project? It was in key distribution protocol for secure two-way communication between smart grids and HAN devices in AMI system of smart grid. Okay, so two-way communication was between? Two-way communication was in between the smart meters and the home area network devices, all the electrical appliances that are connected to electric boards in our houses. And then there is also a connection of smart meter with AMI infrastructure, which is advanced metering infrastructure, with and then there where powerhouse is located. Okay, any IT technology used in this? What, ma'am? Any technology used in this? Well, it was actually what work I done is of developing a key protocol. So it was a light key distribution protocol where recoiling of or you can say the rekeying cost, the distribution of keying cost become O1. And how did you create this key? Ma'am, well, when we hello. Yes. So when a trusted third party is a hardware which is present in smart meters. So what it does, it's create cryptographic keys. So there are two types of keys. There is a private key, which acts like a ID for each devices. So what it will do is register all the devices. Firstly, make their IDs. If the devices leave the connection, the IDs will not be lost. It will be kept. So when it got connected, then there is no assigning of keys or ID to it. That's how it was made the rekeying cost to O1. Okay, Sayed, let's move to the feedback. I want to say कि आपका प्रोजेक्ट अच्छा है बट आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे. मैम वो भी है, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा घबराहट हो रही है कि हाँ, मुझे मैक्सिमम आंसर पते थे और रहा है. मैक्सिमम आंसर पते थे और फिर आई वाजंट एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन. तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, मिरर में देख के प्रैक्टिस करो, या जब भी आप रिवाइज करो तब बोल बोल के प्रैक्टिस करो, बिकॉज बहुत आप अच्छे से आंसर नहीं कर पा रहे हो. प्रॉब्लम ये है. एंड काफी चीजें तो आपने मतलब अच्छे से पढ़ी भी नहीं थी. आई थिंक डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से आइडिया नहीं थी. तो आप एल्गोरिथम्स अगर रख रहे हो टॉप 3 सब्जेक्ट्स में तो आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है. इसमें और बाकी प्रोजेक्ट आपका अच्छा है तो अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो तो फिर even my programming C is more good than the algorithm. So I was going to ask you about if I say only programming in C in
during my interview for subject. यार You एल्गोरिथम तो can देखो say that. कमांड होनी चाहिए ना डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। Yes, ma'am. सर जैसे सर टाइम थोड़ा कम है, मुझे आता था और मैक्सिमम थोड़ा सा प्रेशर हो जाता तो ब्लॉक हो जाता, तो समझ नहीं आता कि फिर ये प्रेशर दिमाग में क्यों नहीं लेना आया, है? तो पता नहीं है। क्यों प्रेशर लेना है यार, ये बताओ ना। ठीक है इंटरव्यू है, नहीं होगा तो उसकी ज्यादा टेंशन मत लो ना रिजल्ट की कि क्या होगा कैसे होगा। उसको एक ऐसा मोमेंट मानो कि एंजॉय है, ठीक है, जाके कुछ सीखने को मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, कुछ पूछेंगे जो बता दूंगा, जो ठीक है नहीं बताया तो ठीक है। ज्यादा टेंशन पाल के दिमाग में जाओगे तो बेकार ही करोगे उसको। कम से कम फ्री माइंड से जाओगे तो अच्छा ही परफॉर्म करके आओगे। यस सर। किसी तरीके का डर मत पैदा करो मन में ना, कोई उनको हवा मत समझो ज्यादा। यस सर। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से कि टीचर हैं अपने जैसे, ऐसे ही वो प्रोफेसर वहां पे साइंटिस्ट होंगे, और वो कोई तुमसे लड़ाई करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। ठीक है, जो Yes, आंसर sir. तुम्हारे अंदर से निकल के आ सकते हैं उनको लेंगे वो, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। यस सर। ठीक है ना, इस तरीके से ज्यादा टेंशन पाल के इंटरव्यू नहीं दिए जाते। ओके सर। ये जो टॉपिक्स है सारे पढ़ो इनको। जैसे अब डिजिटल का क्वेश्चन तुम्हें आइडिया तो है बता, लेकिन वहां घबरा क्यों रहे हो? जब आपको क्लियर बता दिया एफ निकालना है और इनपुट एबीसी साइड में है, तो ड्राइव करो उसको, पूरा दिखाओ उनको एबीसी के फॉर्म में निकाल के आंसर यार। यस सर। सो माय आंसर वाज रॉन्ग और राइट? अरे एस के टर्म्स में आपको नहीं बताना ना फिर। यस एस सर। तो इंटरमीडिएट सिंबल है, जब एबीसी इनपुट है तो एफ पूछा है तो आपको एबीसी के टर्म्स में फाइनल निकालने के लिए कहा गया होगा ना। यस सर। समझे? यस सर। हाँ, और वो जो रिप्रेजेंटेशन तुमने किया है वो भी मेरे को लग रहा है कि गड़बड़ी किया है, चेक कर लेते हैं एक बार। ये है ना? यस सर। तो यहाँ पे साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन पूछा है भाई, तो ये तो साइन बिट होगी। नंबर निगेटिव है, तुम जीरो बता रहे हो साइन बिट, यार पढ़ा नहीं है क्या ये? और सॉरी सर, साइन बिट के लिए सर 1 हो जाएगा और बाकी 41 विल बी रिप्रेजेंटेड एज इट इज फिर इन 41 द को बाइनरी फॉर्म। बाइनरी में कन्वर्ट करके और 1 लगा दो वहां पे, इतना गड़बड़ मत करो। अब डिजिटल को सब्जेक्ट बताया है तो डिजिटल में बूलियन एक्सप्रेशन, मल्टीप्लेक्सर, रजिस्टर, डिजाइनिंग, काउंटर, कुछ भी पूछ सकते हैं। यस सर। तो थोड़ा अच्छे तरीके से जाओ। अब यहाँ पे पूछा तो एफ इक्वल टू पहले तुमने लिखना है कि एस बार, चलो ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, एस बार आई नोट होता है, एक्सप्रेशन लिख लो, प्लस एस आई वन लिख लिया तुमने। अब इनकी वैल्यू तो डालो ना उसमें। ये आई नोट पे क्या आएगा यहाँ पे, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, और इस पे क्या आएगा, ए बी बार सी सी बार बार, सी बार, और यहाँ पे क्या आएगा, ए बी सी बार। ए तो बी ये सी सारी बार। वैल्यूज डाल के एक्सप्रेशन मिनिमाइज करके बताओ वहां पे निकाल के उनको। यस इसमें सर। घबराने की क्या बात है? यस सर। जो काम तुम्हें पता है कि यार कर सकता हूँ, उसको पूरा करके समझाओ उनको, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो। यस सर। और जैसा कि मैम ने बताया कि प्रोजेक्ट तुम्हारा अच्छा है, तो फिर प्रोजेक्ट में ही ज्यादा डिटेल में जाओ, उसकी ओके पूरी सर। पढ़ लो अच्छे तरीके से पूरे प्रोजेक्ट को, क्या क्या तुमने काम किया, कैसे किया, क्यों किया, और उसके आगे उसमें क्या हो सकता है, और फिर उसकी तरफ लेके आओ उनको इंटरव्यू में। ओके एटलीस्ट सर। प्रोजेक्ट वाला सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लो अपना। यस सर। ठीक है, जो भी उसके अंदर डिटेल्स हैं भी पूछेंगे वो, तुमने क्या किया, ऐसा क्यों किया, ये क्या लगाया, कौन सी एल्गोरिथम लगाई, क्या तुमने, क्या रिजल्ट मिले तुम्हारे, वो सारा कुछ उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करो। ओके सर। प्रोजेक्ट तो पूछेंगे जरूर तुमसे वो। यस सर। ठीक है, सर तो सर क्रिप्टोग्राफी के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा सर? एटलीस्ट क्या है क्रिप्टोग्राफी, क्यों तुम उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो, उसके बारे में पढ़ो। यस उसकी सर। फीचर्स क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है आगे, तो उसी की वजह से तुम अट्रैक्टेड हो ना। यस सर। लुक्रेटिव कुछ नहीं होता वर्ड ना, लुक्रेटिव का क्या मतलब है यार, उसके यस सर। एप्लीकेशन बताओ, उसके एडवांटेज बताओ, आगे क्या हमें हो सकते हैं पढ़ने के। यस सर। समझे? ऐसे बोलने से कि लुक्रेटिव है थोड़ी चलेगा, उसको वैलिड पॉइंट से सपोर्ट करो। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो।